Namaste everyone. A very warm welcome to all of you on this bonus session on better sleep. आप सबका स्वागत है इस bonus session में. कहाँ से आप जुड़ रहे हैं? Where are you joining in from? Do share with us in the comment section. We are joining from the Art of Living International Center in Bangalore. आप क्या शहर का नाम, आप कौन से देश से हैं, वो भी ज़रूर लिखिएगा. Do share your the name of your city and your country. We'd love to know where all are everyone joining in from. Good to see so many of you have joined before time. That's excellent. It's going to be a very interesting session. Yeah, we are going to interact with each other. हम आपसे कुछ प्रश्न भी पूछेंगे तो आप ज़रूर उसका उत्तर दीजिएगा. Good. I can see so many cities from Assam to Rajasthan, Mangalore, Trichy, Pune, Ranchi, Jharkhand. Excellent. All over the country. Very nice. Good, good, good. From Nepal, from the US, Nasik, Himachal, Dubai. Very nice. Jharkhand, Hazaribagh, Rajkot, Gujarat, Belgavi. Wow. All over the country and all over the world perhaps. Very nice. We're all, let us see, from Pune, from Jhargram, West Bengal, yeah, from Yavatmal, Ahilyanagar, Sri Ganganagar, very nice. Singapore, a very, very warm welcome to all of you. We will start in a few minutes. We have joined early to just check that our audio and our visuals are okay. So if you can hear me clearly and you can see me, then you can write a Y in the comments. अगर आप मुझे सही से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो आप Y लिख दीजिएगा comments के अंदर. Orissa, very nice. Very nice. Bangalore, Tamil Nadu, Nagpur, Karnataka. Very nice. Oh, so many new places. Sankeshwar, Khamgaon. Good, 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 good. Very nice. Also write down how many days of your continuously you've been attending the challenge. Yeah, is it your 14th day, 13th day, 12th, 11th, maybe your first day? Do write how many days you have completed successfully on this challenge. Now we are coming towards we are looking at the last week of the challenge. Yeah, 1 week left. Didn't you feel like these 2 weeks just rushed past us? है ना, बहुत जल्दी ये 2 हफ्ते निकल गए. 1 हफ्ता और हमारे सामने है. आज आपने कितने दिन तक इस चैलेंज को ज्वाइन किया है वो भी ज़रूर लिखिएगा. 14 दिन, 13 दिन, 12 दिन, या शायद आज आपका पहला या दूसरा दिन हो, है ना. कोई भी अच्छी चीज़ की शुरुआत में कभी कोई देरी नहीं फील करनी चाहिए. जब शुरुआत होती है तभी अच्छा समय है. बहुत बढ़िया. So many 14 days. Excellent. Congratulations. 13. Very good. Very nice. Very nice. Superb. कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा, वैसी ही बात है. बहुत बढ़िया. चलिए जागने से अब नींद की ओर चलते हैं. Let us start our very special session on better sleep. So are we all ready? देखिए सब, अब आप इस सेशन के दौरान भी ऐसे ही इंटरेक्ट करते रहिएगा. हम आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे, उनका उत्तर ज़रूर देना है आपको, हमारे साथ बात करते रहना है और हमें कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा इस सेशन में. चलिए शुरू करते हैं. First, I want to ask you 3 questions, okay? My first question to you is, how many of you consistently sleep later than 11 p.m.? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो 11 बजे के बाद सोते हैं? अगर ऐसा है तो S लिख दीजिए comments में. You can write S in the comments if you sleep later than 11 p.m. Okay? My second question is, how many of you wake up several times during your sleep? कितने लोग ऐसे हैं जो कि नींद में बार बार उठते हैं? हाँ, 2-3 घंटे में 1 बजे 2 बजे जाग खुल जाती है. तो W लिख दीजिए कमेंट्स में. राइट W in the comments. And my third question is, how many of you wake up after 6 to 8 hours of sleep but you don't feel refreshed, you don't feel energized, you feel sleepy? You feel like you did not have a full sleep. कितने लोगों को ऐसा आभास होता है कि आप 6 से 8 घंटे सोते तो हैं पर जब उठते हैं तो एकदम तरोताज़ा और ऊर्जावान नहीं लगता? Then you can write T in the comments for tired. आप T लिख सकते हैं comments में. यहाँ नीचे मेरे पास स्क्रीन है जिसमें मैं आपके सभी रिस्पॉन्सेज देख पा रही हूँ. तो बीच बीच में मैं नीचे देखूंगी क्योंकि यहाँ मैं आपसे बात कर पा रही हूँ. ठीक है? So don't worry, when I look down, I have a screen where I'm able to see your responses.
So that's how we can communicate with each other, okay? I can see so many of you have written W, you have written S, you have written T as well. If you answered W, S or T for any of these questions, then this indicates that our sleep needs some help, right? Now I want to share some research with you. I'll request my team to make this slide bigger. Yeah. Do you know that sleep deprivation is one of the largest silent epidemics of our country? You know, it's spoken very less, very few people actually talk about the importance of sleep. However, lack of sleep is one of the leading causes for cardiovascular disease, along with, of course, our lifestyle. It adds to our risk of cardiovascular disease. Also, it was found that people who were sleeping less than 5 hours a day, their risk of depression goes up 10 times. They become 10 times more at risk to get depressed. आपको जान के अचरज होगा कि हमारे देश में 90 से भी ज़्यादा लोग उतनी नींद नहीं ले रहे जितनी उनको लेनी चाहिए. हाँ, तो ये एक महामारी का ही रूप ले लिया है नींद का कम होने ने. और आपको जान के ये भी शायद अचरज हो कि कम नींद लेने से हमारा रिस्क बढ़ जाता है हार्ट डिजीज़ का, और बल्कि डिप्रेशन का तो रिस्क 10 गुना बढ़ जाता है. तो नींद एक बहुत बहुत आवश्यक चीज़ है. Our sleep is very very important. See, I have not shown you this slide to scare you, but just to make you realize that sleep is not optional. You know, typically whenever we get very busy, the first thing we cut out is the sleep. We don't cut out our social media time, we don't cut out our socializing, we don't cut out our TV, we don't cut out any other thing, but we first cut our sleep. This is very dangerous. Yeah, we have to think of sleep as a very critical function and critical contributor to health. देखिए, जब भी ये स्लाइड आपको डराने के लिए नहीं दिखाई है, इसलिए दिखाई है ताकि आप समझें कि क्या महत्व है नींद का. कई बार हम क्या करते हैं, अच्छा नींद ही तो है ना, बाद में ले लेंगे. अच्छा कुछ आज अच्छा शो आ रहा है, छोड़ो बाद में सो जाएंगे. हाँ, तो हम नींद को उतना महत्व नहीं देते जितना हमें उसे देना चाहिए. So before we move forward, if some of us are joining for the first time, my name is Tanushree Bishnoi and I'm a faculty with the Art of Living, and I've been with you through this challenge and I'm very happy to share this session with you as well. I've been teaching Art of Living programs for the last 15 years and I'm very happy to be with you. मुझे आगे जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए मेरा नाम तनुश्री बिश्नोई है और मैं आर्ट ऑफ लिविंग की टीचर हूँ. पिछले 15 सालों से मैं आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्स सिखाती हूँ और संस्था से मैं करीब 20 साल से जुड़ी हूँ. तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि मुझे ये मौका मिला आपके साथ ये कुछ चीज़ें बांटने का. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट्स सी what we are going to cover in today's session. First, we are going to learn about the impact of sleep. There are many things about sleep that we don't know. So we are going to get to know them. Then we are going to learn some practical and simple tips which will help us sleep better, right? And third, we are going to learn some breathing and relaxation techniques that can also allow us to sleep better. Right? तो आज के सेशन में हम 3 मुख्य चीज़ें करेंगे. एक, हम पहले समझेंगे कि नींद का क्या प्रभाव होता है. बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते. हम सोचते हैं नींद मतलब बस ठीक है, उसमें एनर्जी आ जाता है, थोड़ा ऊर्जावान महसूस करते हैं, शरीर कुछ रिपेयर कर लेता है, बस इतना ही. ऐसा नहीं है. नींद में बहुत कुछ हमारे शरीर में होता है. दूसरी चीज़, हम कुछ सरल से टिप्स सीखेंगे ताकि हम और बेहतर तरीके से सो पाएँ और गहरी नींद हो. और तीसरी चीज़, हम कुछ श्वास और विश्राम की प्रक्रियाएं सीखेंगे. ओके, सो फर्स्ट इम्पैक्ट ऑफ स्लीप, वी ऑल नो इट रिचार्जेस आवर बॉडी. ये तो हम सब जानते हैं. नींद थके हुए होते हैं, पूरे दिन के बाद सोते हैं और सुबह उठते हैं तो एकदम फ्रेश लगता है. You know, we have all experienced how sleep gives us energy, right? So this doesn't need much explanation. However, sleep has a very deep impact on our immune system, right? It is in our sleep that the body repairs all the damage that has happened through the day. It takes stock of what is needed where, and especially when it comes to fighting an infection, sleep is one of the most powerful things you can do to help your immune system. That's why earlier times they would say, you know, sleep is the best medicine, rest is the best medicine. So lie down, sleep for some time. Because it really helps your immune system be more stronger. देखिए, ऊर्जा तो देती है नींद, साथ ही साथ में जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है उस पर भी बहुत बड़ा असर डालती है. अगर आप किसी भी इन्फेक्शन से जूझ रहे हैं, आपको कोई ज़ुकाम या खांसी जैसी भी कोई चीज़ हुई है,
अगर आप सही से नहीं सो रहे, आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता और कमज़ोर होने लगती है। तो सोना बहुत ज़रूरी है ना। Third, very interestingly, it regulates our appetite. You know, here I'd like to share with you, there are two hormones. You know, one is called ghrelin and one is called leptin. So ghrelin is our hunger hormone and leptin is our fullness hormone, in simple words. So ghrelin gives the signal of hunger, leptin gives the signal I am full. Now, when you are sleep deprived, meaning when you are not sleeping well, when you are not sleeping deeply, the balance of these hormones gets destabilized. Right? Then what happens? We tend to overeat, we tend to snack, we tend to binge on food, and this in turn leads to weight gain. You know, आपको जान के शायद आपके लिए ये चीज़ नई हो कि नींद का बहुत बड़ा प्रभाव हमारी भूख पे भी पड़ता है। देखिए, हमारे अंदर दो हार्मोन होते हैं, ग्रेलिन जो कि हमारी भूख का सिग्नल हमारे मस्तिष्क तक भेजता है, और लेप्टिन जो कि अब हो गया, पेट भर चुका है, ये सिग्नल भेजता है। तो जब आप कम सोते हैं, आप गहरी नींद नहीं लेते, तो क्या होता है, ये गड़बड़ आ जाते हैं। तो हमें टाइम बे टाइम कुछ खाने का मन करता है, हम खाने लगते हैं तो रुक ही नहीं पाते, हमें भूख नहीं है फिर भी हम खाए जा रहे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, ये इन दोनों हार्मोन्स की वजह से और बदतर होने लगती हैं। इसकी वजह से वज़न भी और बढ़ने लगता है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू स्लीप वेल इफ़ यू वांट टू लूज़ वेट, राइट। अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं या आप शारीरिक रूप से और स्वस्थ होना चाहते हैं, तो नींद बहुत आवश्यक है। And of course our hormones get regulated. You know, when we are stressed, when we sleep less, the cortisol goes higher. And when cortisol is high, it impacts all our hormones and their regulation. देखिए, जब हम कम सोते हैं तो हम में कॉर्टिज़ोल की मात्रा ज़्यादा रहती है, उससे हमारे सभी हार्मोन्स के ऊपर असर पड़ता है। Also, it impacts our mental health. We have all experienced it. How many of you have experienced one night if you don't sleep well, the next day you are irritated, agitated, you get angry on the smallest thing? If you have experienced this, write I in the comments. आप में से कितने लोग ने अनुभव किया है, रात को अच्छी नींद ना हो तो दूसरे दिन बहुत चिड़चिड़ा लगता है, हाँ, हर चीज़ पे गुस्सा आता है, या ऐसे लगता है कि कोई किसी से बात नहीं करनी? तो आप आई लिख सकते हैं कमेंट्स में। या yes, I can see so many of you are writing I. Yes, exactly, this is all our experience, right? We have experienced this very practically. So what can we do to improve our sleep? The first thing we can do is to regularize our sleep timing. So setting a sleep schedule and following it very religiously is going to help in a big way. देखिए, जैसे खाने के सेशन में बताया था, पाचन शक्ति के सेशन में बताया था, ठीक वैसे ही नींद में भी आपको अपना सोने का समय फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। आप आज 10 बजे सोए, कल 11 बजे, परसों एक अच्छी मूवी आ रही थी तो 12:30 बजे तक जगे रहे, फिर कोई दोस्त का कॉल आ गया तो नेक्स्ट डे फिर 11:30 बज गए। ऐसे अगर हम करते हैं, नींद का समय कुछ फिक्स नहीं है, उठने का समय कुछ फिक्स नहीं है, तो इससे हमारे शरीर की बाकी सभी जो प्रणालियाँ हैं उस पर भी असर पड़ता है। See, if we sleep at any time we wish, one day at 9, the other day at 10, 11:30, 12, 1, 2, what are we doing? Our body is constantly feeling tired, overworked and uncertain. Routine is very, very important for the body. Our, older generations, our parents and grandparents naturally had a routine, and their routine was very much in sync with nature. So they would be alert, awake and working and active through the day, and as soon as it was night, they would start to shut down. That is because this is the most optimum way to retain your health. देखिए, रूटीन चाहे थोड़ा बोरिंग साउंड करता है, पर ये हमारे शरीर के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है ना। जब हम ये करते हैं तो हमारे पूरे स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ता है। Second thing, an early dinner. This is again very, very impactful. I can tell you from my own experience, ever since I have started implementing this, I have seen a very big improvement in my sleep quality. Now, why does this happen? See, our digestive enzymes, they start weakening or slowing down. Our digestive juices, are not secreted in the same way during the night as they are in the day. So, think of it as the battery of the immune system, of the digestive system has gone down as it becomes late.
and then you have a late and a heavy dinner. Now what happens? Now this already tired, almost they have the digestive system has closed the shop, and you give it a big order. Now what will happen? It struggles, you know. So that undigested food stays in your stomach for the whole night, and the next day again it is still digesting. This is the, you know, this produces toxins in our gut. In Ayurveda it is called ama, and this is the harbinger of a lot of diseases. देखिए हम लेट भोजन करते हैं, फिर बहुत भारी भोजन करते हैं, तो क्या होता है, पाचन तंत्र तब तक ऑलमोस्ट रात को बंद हो गया होता है, बहुत कम उसकी एक्टिविटी होती है. तो ऐसे मानिए एक फैक्ट्री में वर्कर पूरे दिन से काम कर रहा है, रात को एकदम थक गया है, फैक्ट्री बंद ही करने वाला था कि एक बड़ा ऑर्डर आ गया. अब वो थका हुआ व्यक्ति क्या कर पाएगा, है ना. बस वैसे ही हमारा वो खाना पूरी तरह से पचता नहीं है, वो अपाच्य भोजन पूरी रात पेट में रहता है, दूसरे दिन तक पचता रहता है. तो इससे हमारे आंतड़ियों में आम, जिसको कहते हैं टॉक्सिन, जो कि टॉक्सिन्स होते हैं उनको आयुर्वेद में आमक कहते हैं. मैंगो वाला आम नहीं, ये आम अलग है. तो इससे बहुत सी बीमारियां होती हैं. यस, ओके. थर्ड थिंग दैट इज़ वेरी इम्पैक्टफुल इज़ डेली एक्सरसाइज और योगा. When we exercise also, it regulates melatonin levels in our body and we are able to sleep better. Yeah? This is very undervalued, but exercise directly impacts our sleep quality. देखिए अगर आप रोज़ कुछ ना कुछ व्यायाम करें, योग करें, तो इससे भी आपको नींद में बहुत असर महसूस होगा. Fourth, very important, I want to take a moment here and request everyone, you know, if you use mobile phones, please activate the night mode or the yellow mode in your phone, so that as it becomes evening, your, you know, the blue light in your phone reduces. Because this blue light, which is there in all devices, your phone, your laptop, your TVs, you know, this light keeps giving the signal to our brain that it is still very much day and it needs to keep working. So it keeps driving our sleep further and further away. Melatonin, which is the sleep hormone, gets repressed because of very bright blue lights. देखिए जो ट्यूबलाइट की रोशनी है, जो हमारे फ़ोन में भी ब्लू लाइट होती है, लैपटॉप में होती है, टीवी में होती है, ये रोशनी हमारे शरीर को ये सिग्नल देती है कि अभी भी दिन है, अभी भी काम करना है, जगे रहो. और इससे हमारी नींद और आगे आगे पुश होती रहती है. अगर आप फ़ोन स्क्रॉल करते करते सोते हैं तो आपने ये नोटिस किया होगा, बीच में एक जगह नींद भी आती है, पर अगर आप देखते जाएं तो थोड़ी देर में चली जाती है ना, क्योंकि हमारे मस्तिष्क को ये सिग्नल मिल रहा है जागते रहो. तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टर्न ऑफ योर डिजिटल डिवाइसेस एटलीस्ट 1 hour बिफोर योर स्लीप, इफ़ नॉट एटलीस्ट 30 minutes. नो, एक बहुत बहुत बड़ी चीज़ जो बहुत बड़ा असर डालती है वो है अपने फ़ोन्स को, अपने लैपटॉप्स को, टीवीज़ को, जो भी डिजिटल डिवाइसेस हैं, सोने से 1 घंटा पहले हमें उन्हें बंद कर देना चाहिए. बहुत से लोग ऐसे हैं जो सोने से पहले आखिरी चीज़ अपना फ़ोन का स्क्रीन ही देखते हैं. हाँ, उनके लिए शायद थोड़ा कठिन हो सकता है, बट ये हमें ज़रूर करना है. वी मस्ट स्टार्ट दिस, राइट. दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट, यू नो, सेल फोन्स हैव रियली created a very harmful impact and have impacted people's sleep in a very bad way. Okay, one more thing which really helps, which is an age-old home remedy, I think in all homes our mothers must have you know, given us this, is to have some turmeric milk before you sleep. Warm turmeric milk, हल्दी का दूध जिसे कहते हैं. हमारी दादी, नानी, माएँ सब हमें शुरू से बताती आई हैं रात को सोने से पहले थोड़ा गर्म दूध पीना चाहिए. इससे नींद आने में हमें और आसानी मिलती है. Okay. Now there are two tips rather that we have for you, which can, which are breathing and meditation techniques, which can help you have a deeper rest. So the pranayam that can really help is Bhramari pranayam. You know, Bhramari pranayam बहुत उपयोगी है अच्छी गहरी नींद के लिए. And the other thing is Yoga Nidra. Yoga Nidra is a guided yogic nap, right? It's very simple. You can just go to YouTube and type Yoga Nidra Shri Shri Ravi Shankar Ji. It's present in both English and Hindi. We'll send the link in your WhatsApp groups also later. So you can just play that video and you can lie down and rest with that, okay? Before going to sleep, you can just put that audio, sleep, and with that only you'll slip into deep sleep, okay? Listen to it and go to sleep, okay? आप चाहे तो इस वीडियो को, इस ऑडियो है ये गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी का, कॉल्ड योग निद्रा. ये अंग्रेजी में भी है, हिंदी में भी है. आप इसको सुनते हुए भी सो सकते हैं.
ठीक है ना। फ़ोन को एयरप्लेन मोड में डाल दीजिए, वीडियो को डाउनलोड करके फिर बजाएंगे तो और अच्छा है। यू नो इट्स बेस्ट इफ़ यू turn off your device and play a downloaded audio so that it doesn't disturb you, right? And Bhramari Pranayam. We have all learned Bhramari Pranayam. We have learned one variation. Today we are going to learn Bhramari Pranayam with Shanmukhi Mudra. आज हम भ्रामरी प्राणायाम का एक दूसरा वेरिएशन सीखेंगे जिसको कहते हैं षण्मुखी मुद्रा। तो आप मेरे साथ साथ कीजिए, बहुत सरल है। So we will take I'll guide you step by step, just follow along, okay? So keep both your hands in front of you. Now place your little finger just below your lips, between your lips and lower lip and your chin. अपनी छोटी उंगली को अपने होठ के नीचे वाली जगह पे रखें. Then your ring finger just above the lips, between the nostril and the upper lip. अपनी अनामिका उंगली को नाक और ऊपरी होठ के बीच की जगह में रखिए. Then you place your middle finger on the nostrils, your index finger gently on the eyes, and your thumb on the cartilage of the ear. So this is the position. None of the fingers are pressing the face, they are just gently placed there. हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है कि किसी भी उंगली को दबाना नहीं है, हल्के से रखना है. मैं एक बार फिर से आपको बताती हूँ. छोटी उंगली आपके होठ के नीचे, आपकी अनामिका होठ के ऊपर, मध्यमा नाक नासिका पर, तर्जनी उंगली आँखों की पलकों के ऊपर और आपका अंगूठा आपके कान की ढकनी पर. Now what are we going to do? We will hold this mudra and we will breathe in and breathe out with the humming sound that we do in Bhramari. What is that sound? Like that. And open and close the lid with the thumb. Okay? तो षण्मुखी मुद्रा में क्या करेंगे? नाक से ही सांस अंदर लेंगे, का स्वर करेंगे और अपने अंगूठे से इस ढकनी को दबाएंगे छोड़ेंगे, दबाएंगे छोड़ेंगे, दबाएंगे छोड़ेंगे. ठीक जैसे हम भस्त्रिका नॉर्मल भ्रामरी में इस उंगली से करते हैं, यहाँ अंगूठे से करें. Done? Let's do this 3 times. 3 बार करते हैं. You have to do this on your own because you won't be able to hear me while you're doing it. अपने आप कीजिए 3 बार. पोजीशन ले लें और शुरू करें. Relax after you complete the 3 rounds. Keep your palms open on the lap. Eyes remain closed for a few moments. कुछ क्षणों के लिए आंखें बंद रखें. शरीर में हो रहे स्पंदन को अनुभव करें. Observe the sensations in the body. Gently you may open your eyes. धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं. Okay, that brings us to the end of this session. If you have any questions, we can now take your questions. चलिए अभी आपके कोई भी प्रश्न हैं नींद से संबंधित तो अभी आपके प्रश्न लेंगे. Yeah, I want to ask you, how are you feeling after this pranayam? Do share that also with us. कि षण्मुखी मुद्रा करके आपको कैसा अनुभव हुआ वो भी ज़रूर हमारे साथ बांटें. हाँ, चलिए आपके कुछ प्रश्न देखते हैं. All right, good. You're feeling very calm, feeling good. Okay. Okay. क्या हम रात को सोने से पहले अच्छी नींद के लिए दही खा सकते हैं? देखिए आप दक्षिण भारत में आएंगे तो यहाँ पर रात के खाने के साथ कर्ड राइस खाते हैं, दही खाते हैं, बट नॉर्थ में जाएंगे तो नहीं खाते हैं ना. तो आप भोजन में वो ग्रहण कीजिए जो आपको सूटेबल लगता है. कुछ लोग ऐसे हैं जो दूध नहीं पीते, तो कोई बात नहीं, आप उसकी जगह हर्बल टीज़ पी सकते हैं या ऐसा कुछ नॉन कैफिनेटेड ग्रीन टी कुछ भी ऐसा पी सकते हैं ना, कषाय जैसा पी सकते हैं. सम ऑफ अस हु डोंट ड्रिंक मिल्क,
You can have herbal teas or non-caffeinated teas. Okay. Can we drink water before going to bed? Yes, you can, but just make sure you're not drinking too much, right? If you have been drinking water throughout the day, then you will notice that, you will not feel extremely thirsty in the night. So drink as much as is needed, don't drink too much. Can you explain Shanmukhi Pranayam once again? Yes, we'll do it in the end, Janika ji, because we have so many other people joining us, so we'll answer some of their questions as well. Then we'll recap Shanmukhi for you. Okay. Now, one thing I want you to do before this session ends, like we did for digestion, I want you to identify what are the 2 changes amongst these 5 tips. What are the 2 tips that you will start implementing from tonight, from today itself? So please write those tips down in the comments. देखिए हमने अच्छी चीज़ें सुनी, अच्छा ये फ़र्क पड़ता है नींद से, अच्छी बात है, और फिर हम वही चीज़ गलत करें तो बात नहीं बनेगी, है ना? तो इन 5 टिप्स में से कौन सी वो 2 चीज़ें हैं जो आप आज से ही शुरू करने वाले हैं, ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा. हाँ, देखिए जब तक हम कुछ बदलाव अपने आप नहीं लाएंगे, कितना भी अच्छा ज्ञान हमारे लिए किसी काम का नहीं है ना. सो नन ऑफ दिस इज़ यूजफुल फॉर अस अनलेस वी रियली इम्प्लीमेंट इट. So decide what are the 2 things you're going to implement. Most of them are quite simple, yeah? Okay. IT profession, it's difficult to keep the time. Yes, that is true. Do the best that you can do, okay? Okay. I keep getting up to use the restroom during sleep. How can I help that? See, some obvious changes that you can make is definitely eating earlier. Keeping the last 30 minutes before you go to sleep, do something very relaxing. Either instead of reading something also, you can avoid that. You can just write your journal. You can listen to some nice relaxing music. You can do a foot massage. All of these things help you relax. And then what happens is, if you need to use the restroom before sleep, you will have that awareness to go. Otherwise, we are watching something and we just fall asleep, then we wake up again and again in the night, right? So this will help you. Unless it is an incontinence issue, then that's a different thing. Okay. सोने के टाइम अचानक कोई चिंता आ जाए, उससे कैसे मुक्ति मिलेगा? प्राणायाम से आप षण्मुखी मुद्रा करके थोड़ी देर बैठिए. नींद से पहले षण्मुखी मुद्रा कीजिए. 4 से 5 बार आप ये कर सकते हैं. उसके बाद योग निद्रा सुनेंगे तो सब ये चिंताएं और सब छटने लगेंगी और आप आराम कर पाएंगे. Okay. See, whatever suggestions we have given you, what will that help you with? Sleeping deeper, getting more continuous rest. Yeah? देखिए ये जो भी हमने आपको टिप्स दिए हैं, ये सब मदद करेंगी. अगर आप रात को बीच बीच में उठते हैं या गहरी नींद नहीं आती या अच्छे से नींद ही नहीं आ रही है रात को 1-2 बजे तक, तो आप ये जितने भी टिप्स दिए हैं इसमें से 2 या 3 भी शुरू करेंगे, आपको बहुत बहुत अंतर मिलेगा. हाँ, see, our sleep happens in 1.5 hour cycles, okay? In that there are different stages of sleep. It's lot of technicality there. Let's not go there. But it's very, very important that we are getting at least 4 cycles of this sleep. So that means 6 hours minimum, and 8 hours is even better, right? So this much sleep is needed for our system. And if you start practicing these techniques, you will get to achieve that. I will reduce my screen time. Very good. That's the most challenging thing to do. I think you're good. And I'm telling you that will make the biggest impact. Very nice. Okay. Maybe I'll just see your questions on my other screen. It comes faster. Just give me a moment. All right. Yeah, all the Shanmukhi repetition requests, I will do it at the end. Please don't worry. I will repeat Shanmukhi Mudra for you. Yeah, just a moment. Okay. Sorry. All right. Couldn't listen to your answer. Should we practice yogic breath all the time? No, not all the time. Okay. Can you please elaborate the science behind mudras? Oh, Praveen ji, that's a very big topic. Unfortunately, we don't have time for that right now. Okay, let's focus on sleep for now. साउंड करते टाइम फिंगर्स सभी मूव करती हैं. इज़ इट ओके? यस, ये होता है क्योंकि आप अपना अंगूठा मूव करें तो थोड़ा बहुत बाकी उंगलियां भी हल्का सा मूव करती हैं. इट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है.
कई बार सोते समय माइंड किसी साइकिल में स्टक हो जाता है जो किसी विशेष विषय वस्तु को लेकर भी नहीं होता, उससे तुरंत बाहर कैसे आ सकते हैं? प्राणायाम से। प्राणायाम वो चीज़ है जिससे कि आप अपने मन पर बहुत एक जल्दी प्रभाव ला सकते हैं, है ना? तो प्राणायाम बहुत असरदार है। How to prevent oversleeping with exercise. If you exercise every day, you will find that the duration of your sleep normalizes. भस्त्रिका करने के बाद दोनों कंधों में काफ़ी दर्द होता है, ये कोई दिक्कत की बात तो नहीं, या फिर इससे भस्त्रिका करने से स्ट्रेच की वजह से है जिससे मुझे बाद में आराम हो जाएगा? नहीं ज्ञानेंद्र जी, अगर आपकी उम्र थोड़ी ज़्यादा है या आपको कुछ फ्रोज़न शोल्डर या ऐसा कुछ है तो आप अवॉइड कीजिए भस्त्रिका करना। और अगर सिर्फ मस्कुलर पेन है, अभी कभी किया ही नहीं कुछ व्यायाम तो हाथ उठा रहे हैं उसकी वजह से दर्द हो रहा है, तो अलग बात है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो डॉक्टर को दिखाना बेहतर रहेगा। एक हल्का सा ऐसा सोरनेस तो रहती है शुरू में, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो डॉक्टर को दिखा लीजिए। Yes, as long as it's a very relaxing book. If it's a murder mystery or a thriller, then you'll keep yourself awake for longer. Okay. If I wake up in the night and I don't get sleep back, what should I do? You can just do some slow breathing. Yeah, you can do candle blowing. You can do Nadi Shodhan Pranayam at that time and then just lie down. Or even then, if it's not coming, just put Yog Nidra and sleep. What to do when you're not able to sleep? See, Anuj ji, this answer has 2-3 different answers. First is what you should do throughout the day. If you're leading a sedentary lifestyle, sitting at the desk, not exercising, not doing anything rigorous body-wise, then you will find it difficult to go to sleep. So you have to tire the body a little bit. So take out at least 30 minutes, 40 minutes of good exercise, number 1. Number 2, all the tips that we have shared will help you, right? And third, of course, doing some pranayama before going to sleep will also make a big difference. Some people are asking for Yog Nidra link. It's already pinned in the description. Oh, great. So those of us who are asking for the Yog Nidra link, it is pinned in the comments. You can click on that and save that video. Okay. Okay. Let me go down. My brother is a cricketer. He does routine properly, but even he goes to sleep early like 9 and has 7 hours, but he didn't get into deep sleep. How do you know that? If you're sleeping for 7 to 8 hours, it's good, right? I have a habit that just before sleeping, a lot of thoughts come. So I just close my eyes. How to fix that? Pranayama will help. If you're bothered by too many thoughts, exercise, pranayama. Both these things will help you. Exercise not just before sleep. During the day, you find out some time, do some exercise, and before going to sleep, a little bit of conscious breathing. It really relaxes the brain. That flurry of thoughts, all the to-do lists of tomorrow, Gurudev was once sharing that just the few minutes before you go to sleep are a very powerful time. And usually what do we think of before going to sleep? All the unfinished work of that day. हम सोने से पहले कई बार क्या क्या सोचते हैं, अरे आज क्या क्या नहीं हुआ, उसकी लिस्ट सोचते हैं. तो गुरुदेव हमारे साथ एक बार बता रहे थे कि उस समय हमें ये नहीं सोचना, बैठकर सोचना, गिनना चाहिए क्या क्या नहीं हुआ. वो बहुत एक शक्तिशाली समय होता है नींद से पहले का. उसमें हमें जो भी अच्छे बड़े प्लान्स हम बनाना चाहते हैं, या कुछ बड़ी सोच रखते हैं, या कुछ अच्छा करना चाहते हैं, उसके बारे में सोच के सोना चाहिए, है ना. और सोने से पहले तो बस थोड़ा सा प्राणायाम करिए तो थोड़ा सा आराम से अपना मन शांत हो जाएगा. Someone wants to know. जस्ट अ मोमेंट, कितने बजे सोना चाहिए? जैसे आपने ब्रेकफास्ट लंच का टाइम बताया था, स्लीप का भी टाइम बता दीजिए. देखिए 10 बजे बहुत अच्छा है. अगर नहीं हो पाता है 10, तो फिर जितना जल्दी हो सके, उससे आगे का जितना भी जल्दी हो सके सो जाइए. आई विल नॉट स्क्रोल माई फोन एट बेड टाइम. वेरी गुड. मोस्ट नीडेड. आई विल स्टार्ट भ्रमरी प्राणायाम. वेरी गुड. डिनर के कितनी देर बाद कर सकते हैं भ्रामरी? इसमें कोई दिक्कत नहीं है. देखिए डिनर के बाद वैसे भी कुछ गैप देना चाहिए. नींद और आपकी जो आखिरी भोजन है और सोने के समय में 2.5 से 3 घंटे का गैप होना चाहिए. इसीलिए अगर आपको याद है तो हमने आपको कहा था जल्दी भोजन कीजिए 6:30 से 7 और फिर आप 10 बजे सोते हैं, तो ये बहुत अच्छा है. someone asked whether what should be the gap between our meal and Brahmari. So I would like to answer that in another way. See, the difference in timing between your last meal and the time you go to sleep should be 2.5 to 3 hours. This is not the case with most of us. What do? We have a late dinner, we watch some TV, and from there directly onto the bed. This is not at all good for sleep. Yeah.
So if you remember in the digestion session, we had shared with you, eat an early dinner. So if you're eating by 7, 7:30, then you're sleeping by 10. It's very good if you can do that. Yeah. Someone was saying भ्रामरी प्राणायाम लेट के कर सकते हैं क्या? नहीं, बैठ के कीजिए और बेहतर है ना? थोड़ी सी बेड पर ही बैठ के कर लीजिए, फिर लेट जाइए उसके बाद. ओके, कैन वी ड्रिंक ensure before sleeping? Sorry, I didn't understand that. Nandan ji, very good. Please practice what we have shared today and do share with us if this helped you. Okay. Okay, I feel fatigued and drowsy 3 to 4 hours after waking. So that's not a great sign, right? So implement any of the of the 5 tips, any 2 tips at least. Do it for 1 week, 10 days, and do share with us how you're feeling. Yeah, every day, is the sleep getting better? Are you getting more rest during the sleep? My brain constantly thinks of something while I'm sleeping, what to do. Exactly the tips that we have given. Just before sleeping, just do a few minutes of pranayam. You will find the thoughts just diffuse. Do it tonight only, okay? Okay. Someone thinks it's 9 o'clock now. I want to sleep at 10. So should I avoid dinner and have milk? Oh, don't, if you're very hungry also, you'll not be able to sleep. So it's okay. Today it's, things are like that. From tomorrow you start your correct meal timing. Okay. मुझे हर रोज़ रात में 2 से 2:30 के बीच में नींद खुल जाती है, कुछ उपाय बताइए. प्रशांत जी, जो आज 5 टिप्स दिए हैं ना, वो सब इसके लिए भी उपाय है वो, है ना? तो उन्हें इम्प्लीमेंट तो कीजिए, उसके बाद हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा. A lot of people, those who are sharing, know that you keep getting up during this thing. Please implement what we have shared today. The 5 tips are going to help you. Especially exercise and pranayama. अगर आपकी नींद टूट कर आती है, बीच बीच में आप उठ रहे हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये 5 टिप्स में से आपके लिए क्या है? रोज़ व्यायाम करना और सोने से पहले थोड़ा सा प्राणायाम करना. ये 2 से स्टार्ट कीजिए, ठीक है? What are the 5 points? Please recap. Sure, I'll recap. Fix your sleep timing. Switch off your devices before you go to bed. Exercise every day. Have a light dinner, and your breathing practices. Yeah. Okay. Some random song plays in my head. Overthinking every decision I've made through the day. Past experiences replay. And I have a lot of difficulty in sleeping. Vanshika ji, whatever we have shared today is going to help you. All the 5 tips, right? Okay, let me just show you once again the tips. Just a minute. Okay. Here, all the tips are shown on the screen. We'll keep it here. If some of you want to make a note of it, you can make a note of it also. Okay, please suggest some breathing exercises for reducing snoring. Devalji, if you have been joining us, all the pranayams we are teaching you are going to help your airways become more clear, stronger, are going to help you also clear your nasal passage. So practice all these pranayams, everything will help. But don't connect any one pranayam with it. That's not how the system works, right? How to do Nadi Shodhan pranayam? Poonamji, join us tomorrow. We will recap it in the session. We have already taught it. You may have missed it. No worries. We are going to teach again. Join us tomorrow for the 7 a.m., 11 a.m. and 7 p.m. sessions. Okay. I get very bad dreams and I don't wake up feeling fresh. Kirti, do practice pranayama and meditation on a daily basis. Not just when you have a bad night's sleep, the next day you do pranayama and then forget about it. That's not how it will work. Consistently practice meditation every day and you will find that these, lot of dreams, bad dreams, or a lot of overthinking just before sleeping, all of this will reduce. Breath is very powerful. Yeah. Okay, will this live be available on YouTube later? I missed some part. Yes, we'll keep this session live for a little longer because many of us could not join because of the time difference. So we will keep this link alive for a little while longer. Yeah, the tips are shown on the screen for those of us who missed it. Okay. Competitive exam की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए स्लीप का टाइमिंग क्या होना चाहिए और वो कैसे अपनी स्लीप को पूरा करें? हाँ, देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है. दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन.
Avya ji, many times we think sleep is sleep. So I can sleep during the day also. It's okay, we have to sleep 6 to 8 hours, na? So I can sleep from 2 to 10. No, sleep is not the same when you sleep at night and in the day. देखिए, रात की नींद और दिन में या कभी भी उलट पुलट टाइम पे सोने का सेम प्रभाव नहीं होता. कुछ चीज़ें हमारे शरीर में ऐसी हैं जो कि सिर्फ रात को ही शरीर करता है. जैसे हमारे लिवर का डिटॉक्स है या हमारे बाकी आंतरिक जो अंग प्रणालियाँ हैं उनका जो रिपेयर है, रिजुविनेशन है, ये एक समय से होता है. और ये तभी होता है जब हम नींद के सबसे गहराई वाले साइकिल में होते हैं. तो अगर हम गहरी नींद नहीं ले रहे हैं या फिर हम दिन में सो रहे हैं तो वो फ़ायदा फिर हमें नहीं होता. हाँ, तो देखिए, पढ़ने के लिए हमारा माइंड फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है ना. उसके लिए नींद बहुत ज़रूरी है. बट कई बार बच्चे नींद की ही कटौती करके पढ़ाई करते हैं. ये बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है. ये बिल्कुल उनके फ़ायदे में नहीं है. तो जहाँ तक हो सके रात में सोने का आदत डालें कि 10 से 5, 10 से 6 तक वो सो रहे हैं. उठकर सुबह नहीं तो शाम को पढ़ाई कर सकते हैं. हाँ, पर रात में देर तक पढ़ना, फिर लेट सोना, फिर और लेट उठना, ये चीज़ आगे उनके जीवन में भी उनके साथ फिर रिपीट होती रहती है ना. आप जो अभी सिखा रहे हैं, जो अभी करा रहे हैं, वही आगे बच्चे जब काम करने लगेंगे तो भी फिर वैसे ही करने लगते हैं. तो ये इस समय पे आप नींद का महत्व को अच्छे से उनको समझाइए ताकि वो आगे भी उसको वैसे ही जारी रखें. ओके ओके. What to do if we move too much during sleep? Move during the day. If you are exercising, if you are using your body properly, you are doing some asanas, some Surya Namaskar or some sports or some gymming, then you will have very still sleep in the night. You know, this hyperactivity during sleep happens because we have not utilized the energy during the day. So move more during the day, so you move less during the night. Okay? Okay. मुझे ये भी आंसर कर दिया है ऑलरेडी. प्लीज़ रिपीट द टिप्स वी हैव ऑलरेडी शोन ऑन द स्क्रीन. आई फील स्लीपी थ्रू आउट द डे एंड आई टेंड टू स्लीप फॉर 12 आवर्स. व्हाट डू आई डू? या टू मच स्लीप इज़ ऑल्सो नॉट गुड. देखिए, किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं है. तो जो बहुत ज़्यादा सोते हैं उनको भी क्या ध्यान रखना चाहिए. फॉर यू नीड टू टेक केयर ऑफ भाविका, राइट? भाविका चंडक, यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर फूड. आर यू ईटिंग वेरी हैवी डिनर्स? आर यू ईटिंग इवन बिफोर यू आर हंग्री? Food also can make you oversleep. Or are you eating too much processed foods, a lot of junk food? Then your body will feel dull and drowsy. You don't feel like doing anything, feel like just sleeping and sleeping. That's not at all good. So food and exercise and regular practice of pranayama. It will bring so much energy to you. Yeah? How many hours of sleep is good? Is afternoon nap required? If yes, for how long? How many hours of sleep is good? Like I said earlier, 6 to 8 hours. I would say more towards 8. Yeah, is very good for us. And afternoon nap is not required. But if you feel tired, you know what you can do? You can lie down in the afternoon instead of sleeping. You know, some people go to sleep in the afternoon. Don't sleep. You can lie down. You can do yog nidra in the afternoon. It will make you feel so energized. Yog nidra takes only 20 minutes, but gives you rest like as if you have slept for 2-3 hours. देखिए, दोपहर को सोने का भी एक बहुत बार प्रश्न आ रहा है. उसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ. देखिए, दोपहर को सोना नहीं चाहिए. लेट जाने में कोई हर्ज नहीं है. थोड़ी देर, आधा घंटा आप अपने शरीर को आप लेट जाएं, थोड़ा विश्राम दें, कोई हर्ज नहीं है. पर नींद में ना चले जाएं, है ना. इससे हमारी रात की नींद का साइकिल भी डिस्टर्ब होता है. और दूसरी चीज़ हम क्या कर सकते हैं? योग निद्रा कर सकते हैं दोपहर को. तो ये 20 ही मिनट के लेटे हुए ध्यान में आपको ऐसी फ्रेशनेस, इतनी तरोताज़गी महसूस होगी जैसे आप 2-3 घंटे की नींद लिया है आपने. यू कैन डू दीज 2 थिंग्स. ओके. हाउ मेनी आवर्स? आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड. 6 to 8, more towards 8 than 6. Which are the pranayams which are useful to do before sleep other than Bhramari? You can do Nadi Shodhan pranayam. That's also very, very good to bring more relaxation and deeper sleep. Okay. Please suggest a proper course where I can learn pranayama, meditation. Yeah, Prerna ji, we are going to talk about this on the 19th, about the Art of Living program, how you can learn Sudarshan Kriya. It cannot be taught on YouTube. Still, people were asking on this chat about Sudarshan Kriya. It cannot be taught on YouTube. It's not going to be taught in this challenge. There is a proper way to do it. It's a very powerful technique, very impactful. There is a program where you can learn it.
how to register, what are the details, we will share with you on 19th. Okay, so stay back till then. Okay, diabetes makes people sleepy for several hours during the day. Any tips? Yes, more physical activity. Staying active throughout the day will help you also normalize your insulin levels. Somebody saying, जी मैम अगर 10 बजे सो जाए तो सुबह कितने बजे उठना चाहिए? देखिए आपकी अपने आप 5 से 6 बजे के बीच में नींद खुल जानी चाहिए. अगर आप 10 बजे रोज़ नियमित रूप से सो रहे हैं ना, 6 बजे तक आप सोएं तो अच्छा है. वो देखिए वही 8 घंटे है ना, तो 10 से सोएंगे तो 6 बज जाएंगे ऐसे. How much time before bed can we take milk? You can leave half an hour gap, right? Before you're drinking some milk, if milk suits you. You know, some people it doesn't suit, so you can just have some chamomile or some herbal thing which has no caffeine, herbal drink. Okay. I have a habit of reading books at bedtime. Is there anything wrong with reading a book before going to sleep? No, not at all. You can read. Reading is so relaxing, provided you are reading a relaxing book. Okay. बात करते समय हम हकलाते हैं, इसके लिए कोई ध्यान है क्या? सुनीता जी, सुदर्शन क्रिया सीखें और करें, उससे आपको बहुत फ़र्क महसूस होगा. ओके, उसके बारे में हम संडे को बात करेंगे, कैसे सीख सकते हैं, कौन से कोर्स में सीखते हैं, कैसे रजिस्टर करना है, वो सब बातें बताएंगे. ओके, ऑल राइट. आई नीड टू गेट अप. आई हैव आंसर्ड दिस ऑलरेडी. Let me just go down. Maybe my team can also help if they see some unique questions that we have not yet answered. Someone is saying, I want to have a deep sleep, not disturbed one. So what to do? These 5 tips? The whole session was for that. You're asking at the end. Okay. प्रेगनेंसी में बेटर स्लीप कैसे ले सकते हैं? देखिए, पूरे दिन में थोड़ा बहुत चलना फिरना, जितना भी डॉक्टर ने आपको बोला है वो ज़रूर कीजिए. और रात को सोने से पहले थोड़ा सा प्राणायाम ध्यान करेंगे तो आपको और गहरी नींद आएगी. रिकैप तो हमने स्क्रीन पे अभी लगा दिया था, अभी हम फिर से लगा देते हैं. लेट्स पुट दैट स्लाइड अगेन. ओके ओके, ये सब टिप्स हैं जो हमने आज शेयर किए ना, 5 टिप्स, वो अभी स्क्रीन पर दिख रही हैं. आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं. इफ़ यू विश यू कैन नोट डाउन दीज टिप्स, राइट. I want to switch my career and I have migraine and now I'm just continuously thinking about it and facing a lot of lack of focus. Please tell me how can I keep my mind calm and focused. Ekta ji, join us for our meditation challenge sessions. You seem to be new to the challenge, so you can join us from tomorrow 7 a.m., 11 a.m. and 7 p.m. We have 30-minute sessions where we do pranayama and meditation. Both of that will help you to have more relaxed and a more focused mind. So that you can take the right decision for yourself. Okay. Pauline is saying that during period she cannot sleep properly. The entire day she feels tired. Are there any special tips? No, regular, like I said, pranayama and meditation will help you. You know, it energizes our body, also gives our mind that rest. And especially during your cycle, you know, you're going through some discomfort, you're going through some emotional ups and downs. That time it becomes even more important. You will feel better. दिन में 2 घंटे की नींद होने के बाद रात भर नींद नहीं आती, क्या ये कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर तो नहीं है? नहीं, आप दिन में सोना बंद कर दें, रात को सोइए. ठीक है, आप दिन में इतना ज़्यादा सो रहे हैं कि रात को नींद नहीं आ रही, इसलिए आप दिन में मत सोएं. आपने अपने प्रश्न का उत्तर अपने प्रश्न में ही दे दिया. ओके, हाउ टू गेट डीप स्लीप. The tips are shown on the screen. Start implementing any 2 of these 5 and you will see a big difference. सोने समय रूम का टेम्परेचर कम होना चाहिए क्या? हाँ, ऐसा कहा जाता है कि बहुत गर्मी हो तो उतने अच्छे से नींद नहीं आती, तो ठीक है, थोड़ा टेम्परेचर कम रखिए. पर बहुत सर्दी में भी फिर जितना आपसे हो सके मैनेज करिए, है ना. पर इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की भी ज़रूरत नहीं है. अगर आप रोज़ योगाभ्यास करते हैं, रोज़ प्राणायाम करते हैं, तो ये आपको इतना परेशान नहीं करेगा टेम्परेचर. When to do these 2 exercises? Gap between haldi milk and sleep, half an hour. When to do these 2 exercises? You can do Shanmukhi just 5 to 10 minutes before going to sleep, and same with Yoga Nidra. Yeah, you can choose if you want to do Yoga Nidra as an afternoon nap or you want to do it in the night. It's up to you. How to avoid thinking about things which I couldn't do today. This is just a culturing of the mind. You have to just remind yourself, come on, this time is very important. Let me think of something more productive. Just knowing this will help. Yeah. Okay.
Can you suggest some herbal tea for both day and night time? Yes, there are so many options available. Even something simple like just boiling jeera, ajwain and saunf in some water, drinking that also relaxes you, right? So you don't need to go for some fancy teas. You can just make some general, we at home, everyone, your mother will also share with you so many of the home remedies. You can put a pinch of haldi in it, a little black pepper, you can drink that. Okay. Somebody Let me saying just they're come down. suffering from sleep, I don't know, apnea. Yeah, They're sleep saying- apnea. Yeah. So sleep apnea, you practice pranayama every day. Don't ask me which pranayama because it's all the pranayamas. You have to practice all pranayamas, or at least 2 to 3 of the ones that we have taught you. Do regularly practice pranayama. It will really help keep, strengthen your airways, and you will find a reduction in your symptoms for sure. Can I come out of sleeping pills? Yes. Yes, thousands of people have come out of sleeping pills by practicing these tips that we have given you today. Do regular breath work and pranayama meditation. Yeah, have an early and light dinner. Exercise every day. Set your sleep timing. These are all things that will help you. Okay. Somebody saying if you want to meditate, then I have to get up early in the morning, like 4 or 5 o'clock. Then sleep duration will get reduced. How to manage? No, why you have to get up at 4 and 5 o'clock? Sleep well, get up in the morning by 6 also, you can meditate. Yeah. See, don't make it difficult for yourself by putting these, such harsh conditions. Then what happens? We don't do that also. We decide, oh, I will meditate at 5 o'clock. And if you don't wake up at 5 o'clock, oh, now I can't meditate. No. Yeah? Whenever I wake up, meditation should be a non-compromisable. Then we will continue. ठीक है ना? देखिए हम कई बार क्या होता है, हम इतनी कंडीशन लगा देते हैं, अच्छा मैं 4 बजे उठूंगी, फिर मैं 5 बजे ध्यान करूंगी, अब वो 4 बजे की जगह 5 बजे उठे तो ध्यान छोड़ देते हैं. ये नहीं करना चाहिए, है ना? जब भी उठेंगे ध्यान ज़रूर करना है, ऐसा मान के चलिए, तो फिर आप अपने आप पाएंगे चीज़ें सेट होने लगेंगी साइकिल में. ओके. डिनर और योग निद्रा में कितना गैप? डिनर और योग निद्रा में कितना गैप? देखिए, डिनर और नींद में जितना गैप उतना ही. सो 2.5 से 3 घंटे आप छोड़िए, ठीक है. बहुत आपके हाथ में नहीं है डिनर, सपोज थोड़ा लेट ही हो रहा है, कोई बात नहीं, फिर आप इतना मत सोचिए. भोजन के तुरंत बाद भी योग निद्रा कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है. यू कैन डू योग निद्रा इमीडिएटली आफ्टर योर मील्स ऑल्सो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. बट इट्स गुड नॉट टू लाई डाउन इमीडिएटली आफ्टर योर मील, है ना. जस्ट वॉक अराउंड. रिमेंबर द 100 steps आफ्टर मील्स, शतपावली, you can do that. Yeah? So some gentle stroll or sitting in Vajrasana for some time after dinner, all of these things will help you digest your food earlier, better. All right. I think we have answered quite a few questions. Yeah. How to improve an infant's sleep cycle? Oh no, that is a very different topic. Whatever tips we have given you are for you, okay? For infants and babies, it's a very different field, so you should ask a person who is an expert in babies and infants, okay? This is for adults. Do we have any pranayam to control snoring? Yes, Kiranji, all the pranayams we have taught you will help in snoring, sleep apnea, all of these, sleeping conditions. It will help in a big way. So practice all these pranayams because they strengthen your breathing muscles. So am I saying, ma'am, generally I feel very sleepy even during the day. So I miss a lot of content in my class. What can I do? When you have good sleep during the night, this will not happen. So check, are you sleeping well in the night? If you are sleep deprived, then your body catches up with that throughout the day. This is one thing. Second, check that you are well hydrated. When we drink less water also, body feels very dull, very drowsy. These 2 things you check. Okay, how much milk should one drink? Just a small cup. Okay. All right, how to improve memory and forget while talking. Divakar ji, join us every day for our breathwork and meditation sessions. Meditation has a very powerful impact on our memory. It improves the hippocampal volume. The grey matter in the hippocampus increases. And this in turn affects our memory. All right. Someone is saying at night when they sleep, they get horror thoughts. How to get out of that? Yeah, all the tips we have shared today. These are all for what are the conditions which it will help. Let me recap. देखिए ये जो tips हैं ये किस किस में मदद करेंगे उसके ऊपर थोड़ा सा. It will help you if you wake up repeated times in the night. It will help you if you are sleeping for 6 to 8 hours but you are not getting rest.
It will help you if you're not sleeping for 6 to 8 hours. It will help you with all the sleep related things. But start practicing. Yeah? Good, very nice. Should we do Kapalbhati before sleep? No, 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 that's not advisable. Kapalbhati, Bhastrika, these are very energizing pranayams. You should avoid doing them just before going to sleep. Okay? Can I do Yog Nidra 2 times as I have a habit of taking a nap in the... It's okay, you can do it 2 times. After... Okay, I have answered this already. Those who are getting up in the night, start practicing these tips. Yeah, you will see a big difference. क्या हम मिल्क की जगह वार्म टर्मरिक वाटर ले सकते हैं रात में? यस, यू कैन डू दैट. RK जी, रंजना जी, यू कैन डू दैट. देखिए प्रगति जी, हमने सारी जो टिप्स बोली है ना वो स्क्रीन पे दिखा दी, आप उन्हें पढ़ सकते हैं तो आपका रिकैप भी हो जाएगा. Okay, I am diabetic. Can I take turmeric milk before sleep? You can check with your doctor because it depends on how much your sugar is balanced or it's out of control or what is the diet they have you on. So check with your doctor or your nutritionist once. These are general guidelines, applies to most people. If you have a particular condition, you can always check. Okay, how to learn meditation for teaching purpose with certification. So Nikki ji, the first step is to first become a regular meditator yourself. This is something that you need to do first. Then of course step by step your teacher will keep guiding you. Okay. What should be the height of the pillow? Good question. Samta ji, when we sleep on one of our sides, if you take a very big pillow, what it does? It tilts our neck like this. So one part of the neck is getting compressed and the other is getting overextended. So what is suggested that when you lie down on your side, your pillow's thickness should be a little lesser than the width of your shoulder. किसी का प्रश्न था कि तकिए की मोटाई कितनी होनी चाहिए. देखिए जब हम करवट पे सोते हैं ना, अगर बहुत मोटा पिलो लिया है तो क्या होता है, गर्दन ऐसे हो जाती है. इधर सोए हैं पर गर्दन ऐसे, एक हिस्सा कंप्रेस हो रहा है, दब रहा है, और एक हिस्सा बहुत खिंच रहा है. ये अच्छा नहीं है हमारे लिए. तो पिलो की मोटाई कितनी होनी चाहिए? हमारी कंधे की चौड़ाई से थोड़ी कम. ओके, ऑल राइट. Shall we bring this session to a close? Because I think many questions are getting repeated. My mom has lipoma, gant on the back of neck and shoulders. Corner presses against the spinal cord, nerves going in hands, difficult to operate, pain in hand. She is diabetic. Any solution? Prerna ji, I hope you have met with a good physiotherapist, because there are some very simple exercises that can help relieve this compression. Yeah, so meet with a good physiotherapist. They will give you some good solutions for this, because one needs to study the case in detail to be able to do this. My daughters sleep till 12 p.m. but still they feel sleepy. What should I do? You need to help them to realign their sleep cycle. 12 बजे तक वो दिन में सो रहे हैं बच्चे, फिर तो पूरे दिन sleepy लगेगा ही, है ना. पूरा हमारा जो melatonin, which is our sleep hormone, it naturally gets released during evening time. Okay, and if you're using less digital devices, if you're not scrolling through your phone, that a healthy amount of melatonin is present, which leads to deeper sleep. Now, if you change your sleep cycles any way which you want, it upsets this natural rhythm, and it affects the quality and depth of your sleep. Yeah, hope that answers your question. I have a habit of drinking coffee twice a day. I want to reduce. What should I do? Your meditation practice will give you more strength of mind. So then whatever you decide, you'll be able to do it. You know the benefits of changing this, right? You have a clear idea why I should reduce my coffee. If you don't, then you should get that first. Whenever you want to change anything, ask yourself why. If the reason is strong enough, then you will see that you are able to change it. If the reason is little weak, then you will find a way to still keep doing it. Hiten is repeatedly asking, can pranayam, meditation, Sudarshan Kriya help cure urticaria? Urticaria, yeah. In my experience, I have seen a lot of changes along with keeping good diet, drinking lots of water, all of the guidelines that your doctor must have given you. Are you following them? With that, you add pranayama and meditation, right? It will help you.
Okay, my mom does not get good sleep every day. She takes sleeping tablets. What to do? She is 61 years old. Which pranayam is suitable for? What we taught today, the Shanmukhi, she can do that. And help her implement at least 3 or 2 of these tips that we have given today, that are showing on the screen right now. Sometimes I get slight chest pain. What might be the reason? That a doctor will tell you, Radhaji, you have to meet with a doctor. You know, we should not solve our health problems with Google. We should get the help of trained professionals. They have trained for years, they have so much experience, they will guide you. देखिए, आपको कोई भी दिक्कत होती है शरीर में ना, तो आजकल ये एक हम सीधा गूगल पे जाते हैं, है ना. ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक जो ट्रेन डॉक्टर हैं जिन्होंने इतने सालों का अनुभव है उनका, जब हम उनसे मिलते हैं वो हमें सही दिशा दिखाते हैं स्वास्थ्य के लिए. ठीक है, ओके. समझ आस्किंग, अगर हम कम सोए तो हमारा ओवरऑल लाइफ स्पैन भी कम हो जाएगा क्या? ये तो मुझे नहीं पता, ऐसा रिसर्च तो मैंने नहीं पढ़ा, बट हाँ, जितना भी लाइफ स्पैन है उसमें हेल्थ पे ज़रूर असर पड़ेगा. देखिए, कितने दिन से भी ज़्यादा हम कैसे जी रहे हैं वो तो बहुत ज़रूरी है ना. हर दिन हम कैसे जी रहे हैं, क्या हम ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं, क्या हम प्रसन्न महसूस कर रहे हैं, हर चीज़ को एक जोश के साथ कर रहे हैं कि नहीं, इन सब पे तो प्रभाव बहुत पड़ेगा नींद कम लेने का, है ना. Okay, can we add a pinch of black pepper in haldi doodh? Yes, absolutely, you can. It's good. Is it wrong to sleep for 10 to 12 hours? No, it's okay. Once or twice if it happens, it's fine. You know, you check your body. Does your body need that much time? Listen to your body and act accordingly. As long as you have a healthy mix of exercise, you are being active throughout the day, then your body will only tell you the right amount of sleep. But if you're sleeping at 1 a.m. and then 10 to 12 hours, that's very different. But if you're sleeping at 9 p.m. or 10 p.m. and then 10 to 12 hours, that's very different. So these are two different cases, yeah? Okay. All right. So now I see most of the questions are repeating. We have answered these questions already and the tips are on the screen. You can implement that. All right. So we'll bring this session to a close here. We are anyways meeting 3 times a day for the next 7 days as well. So if any unanswered questions, you can always ask me there as well. Okay. So stay connected, sleep well. Now it's almost sleep time for everyone. And we will see you for the next session. Namaste.